हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मीन्स रीडिंग करेंगे फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन को पहले वीडियोस में समझ लिया है। अब इसमें से हम लोग जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फूड वैरायटी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं तो आपको वो नहीं पढ़नी है। आप लोगों को इसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो यहाँ पर ये देखिए, आप लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। नाउ we will see on the another thing that we need to learn from over here. सी फूड मटेरियल एंड सोर्सेज यहाँ से पढ़ने लायक है तो हम यहाँ से रीड करते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawn, beef, pork and such others which come from animals. तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा that sources are plants and animals. सोर्स क्या होता है? सोर्स ऐसी चीज़ होती है जिससे हमको कुछ मिलता है। तो यहाँ पर प्लांट एक सोर्स ऑफ फूड है, मीन्स इससे हमको फूड मिल रहा है। सिमिलरली एनिमल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड। हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी 3 है, इसको नहीं देखनी है। नाउ सी, यहाँ पर देखो, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, यहीं पर डायरेक्टली आ रहा है। तो हम देखते हैं प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Yes, goat can also give us milk. Similarly, camel can also give us milk. Okay, so these are the other examples. Now see students, plant part and animal products as food. So plant are one of the source of food. Which parts of the plants are these? अब हम लोग यहाँ पर edible parts of plant पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने एक वीडियो में अच्छे से explain with examples. I have explained with examples. You can go there and you can check it. यहाँ पर हम लोग उनके बारे में ही और थोड़ा सा पढ़ेंगे. See, we eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers. Yes, have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Try it. Some plants have 2 or more edible or eatable parts. Seed of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of different parts of banana plant that are used as food? Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ इनको हम लोगों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलो अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली एक्टिविटी 5 पे। यहाँ से क्योंकि एकदम रीडिंग के लिए ये, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन द कंटेनर फिल्ड विद द वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. रैप देम इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. फॉलोइंग डे हम लोग क्या देखेंगे, उसमें से जड़ें आ गई हैं बाहर. ओके, रूट्स विल कम आउट विद चेंजेस इन द सीड. अ स्मॉल white structure may have grown out of seeds. If so, the seeds have sprouted. अगर आपको उसमें से roots आती हुई दिख रही है, that means that the seed is sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. Cover with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. Okay? Students, now see over here, do you know where honeybees come from? Honey comes from, or what it is produced? Have you ever seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juice. हम लोगों ने nectar पढ़ा है जो कि flowers के अंदर होता है, वहाँ से bees लेती हैं और अपने beehive में store करती. beehive means मधुमक्खी का छत्ता. From flower, convert it into honey and store it in their hive. honey इसका मतलब जो nectar का मीठा form होगा. Okay? Flowers and their nectar may be available only for a part of year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey. Now, what do animals eat? Do you have a cattle or pet that you take care of? A dog, cat, buffalo, or a goat? You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? यहाँ पर हम लोग हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर के बारे में डिस्कस करेंगे.
Now before that we see activity C6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they ईट इज़ ऑल्सो गिवन. नाउ फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल. यहाँ पर आप लोगों को टेबल को जो है वो फिल करना है. लाइक रैट, सो रैट ईट ग्रेन्स एंड द रिमेनिंग पार्ट. वैसे ही लॉयन जो है वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. टाइगर भी सेम. स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट्स. हाउस लिजार्ड ऑल्सो इंसेक्ट्स एज वेल एज द ग्रेन्स. Then cow eats only grass and plant products. Human beings, we eat both animal and plant. Like similarly butterfly eat nectar. Crow eat both veg and non-veg. Similarly others also you can list. Okay, now you see over here, yes, from here, place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. कौन से animals जो कि plant products खाते हैं? There are some animals which eat other animals. Place this in group 2. These animals are carnivores. And do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These animals are omnivores. तो हम लोगों ने herbivore, carnivore, omnivore के बारे में पढ़ा था और इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने वीडियोज़ में पहले से ही पढ़ रखे हैं. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. हम लोगों को पता है कि कुछ बहुत इंडिया में ऐसे भी जने हैं जिनके पास फूड पूरा नहीं मिल पाता है. तो हमको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ या कुछ ऐसी टेक्निक्स लेनी पड़ेगी जिससे कि उनको फूड मिले. और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको कंटिन्यूस मीन्स हर दिन का फूड मिले. स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न दिस होल चैप्टर और इसके अंदर NCERT एक्सरसाइजेज है दैट योर टीचर मस्ट हैव सॉल्व. और अगर सॉल्व नहीं किए तो आप कमेंट्स में बोल दीजिएगा तो हम लोग वहाँ से देख लेंगे. ओके, लेट्स सी सम ऑफ दीज exercises. Like first is, do you find that all living beings need the same kind of food? No, क्योंकि हम लोगों ने herbivore, carnivore, omnivore पढ़ा था. Next, that is the name 5 plants and their parts that we eat. So 5 plants जैसे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर लिख लीजिए, कैरेट लिख लीजिए या रेडिश लिख लीजिए. या फिर यू कैन ऑल्सो पुट अनदर थिंग लाइक यू कैन पुट कैबेज और यू कैन पुट स्पिनैक. और वो कौन कौन से प्लांट के पार्ट है वो आप लिख लीजिए. देन मोयाज द कॉलम. सो सी मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी. दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. Spinach, cauliflower, carrot are plants and plant product. Lion and tiger eat other animals. And herbivore, spinach, cauliflower, carrot का जो है वो vegetables हैं. And herbivores eat plants and plant products. Similarly, you see the fill in the blanks. See, यहाँ पर आपको इन वर्ड से ही फिल करना है. Tiger is dash, so we will write carnivore because it only eat meat. Deer eats only plant products and so is called herbivore. Parrots eat only plant products. The dash that we drink or the milk that we drink come from cow, buffalo and goats. देखो यहाँ पर बच्चों पहले से इन्होंने एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दे दिया goat. ओके, and we get sugar from sugar cane. ये आपको एक लर्न करना है. ओके, so this is how we have completed this chapter. Make sure you have subscribed this channel और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर को नहीं समझ आ रहा है तो पहले वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू.